Assalamu alaikum. It is the second part of lecture number 5 in which we studied about rounding numbers to the nearest 10, and I told you that I'm going to share some more examples with you. Let's start with this one. The number is 4308 and here you have to round it off to nearest 10. So first of all we will search here for the tens place. So this is the ones place, so this will be the tens place. Underline that tens place. After that write 0 in place of this 8 in this way. Okay, this 0 is for the digit at ones place. The next is that you have to find what will you write for in place of this 0. So it depends on the digit 8 which is on the ones place. So let's check it, that if it's less than 5 then the 0 will remain same, but if it is 5 or greater than 5 then you are going to add 1 in this 0. So we know that this 8 is greater than 5, that's why 1 will be added to 0, and when you add 1 in 0 the answer is 1. Then you have digit 3 which is on the hundreds place. Because we are rounding off till tens place, that's why this 100 is not going to change and 100 place ka 3 same rahega. Similarly 1000 place ka 4 bhi same rahega. Okay, so the number will be 4310 after rounding off. Let's check this one. Here we have 9555. First of all underline that tens place jahan tak aapne rounding off karni hai. After that write 0 for this first 5 which is on the ones place. Then you have to decide कि इस 5 की जगह पे आपने क्या लिखना है. Then let's check ones place के 5 को, and we know that it's 5. So whenever it's 5 then we add 1 in the tens place digit. अब यहाँ पे जब आप 5 में 1 ऐड करें the answer will be 6. So now check कि क्या 100 place का number change होगा. No, it's not going to change. It will remain 5, and then the 1000 place number is also not going to change. And I told you कि ये hundreds and thousands places के number कब change होते हैं, जब आपकी टेंस प्लेस का डिजिट 9 हो और उसमें हमें 1 ऐड करना हो और वो 10 बन जाए, तो उसकी वजह से हमें 1 प्रीवियस को कैरी देना होता है, तो फिर आपके प्रीवियस 100 और थाउजेंड्स के प्लेसेस चेंज होती हैं, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. ओके, लेट्स चेक दिस एग्जांपल. दिस इज़ द टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस की जगह पे राइट 0. ओके, आफ्टर दैट चेक कि आपने इस टेंस प्लेस पे क्या लिखना है. उसके लिए यू हैव टू चेक द डिजिट ऑन द वंस प्लेस. नाउ लेट्स चेक इट दैट it's greater than 5, so that's why we will add 1 in this 0. So 0 plus 1 is 1. After that this 0 on the hundreds place will also remain same, and the 1 on the 1000 place will also not change. So 1006 will be rounded off to 1010. Okay, next is 591. The same process. This is the tens place जिसको change करना है. 0 की 1 की जगह पे you will write a 0. After that check this one. So here it's less than 5, that's why 9 is not going to change, it will remain same. So we are going to write 9 and then 5 will also not change. Okay, so here you observe कि हमारे पास 10 place में 9 आया है, but उसकी previous प्लेस पे जो डिजिट है 5 वो चेंज नहीं हुआ. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जब भी आपके पास 10 प्लेस पे 9 आएगा तो वो उसकी वजह से प्रीवियस डिजिट चेंज होगा. इट डिपेंड्स कि अगर वंस प्लेस पे 5 से ग्रेटर नंबर था तो हमने 9 में एडिशन की 1 की और वो 10 बना, तो आपका 100 प्लेस का डिजिट चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा. द नेक्स्ट इज़ 7996. हेयर this is the tens place and you have to write a 0 like this for this digit 6. Okay, after that check कि इस 9 की जगह पे जो tens place पे है what should you write, and check this digit on the ones place, it's greater than 5, that's why आप add करेंगे 9 में 1, and here when you add 1 in 9 the answer is 10. So you will write 0 for this 9.
ओके। देन जो आपका 1 था 10 का, दैट इज़ गिवन कैरी टू द प्रीवियस 9, सो 9 + 1 इज़ अगेन 10, दिस 9 इसकी जगह भी यू विल राइट 0, एंड जो 1 है 10 का, दैट विल बी गिवन कैरी टू दिस 7, सो 7 + 1 इज़ 8, सो 7 की जगह पे विल राइट 8, सो 7996 इज राउंडेड ऑफ टू 8000, ओके। सो 6 की जगह पे 0, देन इस 9 की जगह पे ये 0, इस 9 की जगह पे ये 0, एंड फॉर 7 you have written 8, okay. The next is page number 15, question number 5. Round 7996 to the nearest 10. Look at the number line below. Starting number is 7990, then 7995, then 7996, the number which you have to round off, and at the end you have 8000. यहाँ पे यू हैव टू चेक कि 7996 ज़्यादा क्लोज़र किसके हैं, 7990 के या 8000 के। सो इसके लिए वी हैव टू चेक कि इसकी जो वंस प्लेस का डिजिट है वो 5 है या 5 से ग्रेटर है, तो फिर इट विल बी क्लोज़र टू 8000, एंड इफ़ वंस प्लेस का डिजिट 5 से स्मॉलर है तो देन इट वुड बी मोर क्लोज़र टू 7990. सो वी कैन सी दैट दिस 6 इज़ ग्रेटर देन 5, दैट्स वाई विल राउंड इट ऑफ टू 8000. यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि 7996 तो ज़्यादा क्लोज़र 7995 के है तो हमने उसको उस पर राउंड ऑफ क्यों नहीं किया। द रीज़न इज़ के नियरेस्ट 10 के लिए राउंडिंग ऑफ करते हुए ज़रूरी है कि नंबर्स के एंड पे 0 आए, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है वंस प्लेस पे 0 और 8000 में आ रहा है वंस प्लेस पे 0, सो दैट्स वाई हम इन दोनों में से किसी पे इसको राउंड ऑफ करेंगे, और इनमें से भी किस पे करेंगे जिसके वो ज़्यादा क्लोज़र होगा, और वो हमें कैसे पता चलेगा, वी विल चेक दी वंस प्लेस, एज आई हैव शोन यू दिस सेम एग्जाम्पल इन दिस प्रीवियस पेज कि वी चेक्ड दिस वंस प्लेस डिजिट, ये 5 से ग्रेटर था, दैट्स वाई हमने 9 में 1 ऐड किया, तो जब 1 ऐड किया वो 10 बन गया, देन उसकी वजह से कैरी पिछले नंबर्स को गया और ये राउंड ऑफ होके 8000 बन गया। तो हेयर 7996 इज़ नियरर टू 8000 than to 7990. That's why 7996 is approximately equals to 8000. The next same page, question number 6. This is your homework and you have to solve it on your books. Then the same page, practice. This is also your homework and you have to solve it on your books. ठीक है। At the end, I want to just tell you कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू कि आप जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें ड्रॉ करेंगे बॉक्सेस, एंड यू विल राइट लेस देन, सेम, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यू विल ऐड 1 या ये बॉक्स ड्रॉ करना है। नो, यू डोंट नीड टू ड्रॉ और राइट एनीथिंग लाइक दैट। आपने जस्ट इन सब चीज़ों को अपने माइंड में सोचना है एंड देन सिंपल आंसर इस तरह से उसके सामने लिख देना है। ओके, सो आई होप सो कि आज का लेक्चर सुनने के बाद यू कैन ईजिली सॉल्व योर होमवर्क नाउ. So it is the end of your lecture. Thank you.